Hello everyone and welcome to another video on Python series by Python AI Lab. So today we are going to learn what are the functions in Python. Okay. So right now we have saw different things in Python like a decision making statements and loop and variables, and the next thing which come under a Python series is functions. What are the Python function? So let's get started with the functions, but make sure to subscribe to Python AI Lab for more tutorial. Okay. So yes, in today's tutorial we are going to see a theoretical about functions and everything. In the next tutorial we are going to do a hands-on. Okay. So let's get started with that. Okay. So our today's agenda is we are going to see what is a function, what is the examples, and what are the built-in function. This is the three most important thing, and it is very important to know each and everything about the function. If you are familiar with all these things, so it's very easy for you to it means that it is very easy to work with the functions. Okay, so let me go with the very first topic, which is the function. Okay. So what is a function? So function is nothing but a block of code as usual we have saw in our last topics like loops and decision making. उसकी तरह ये भी एक है, एक specific task perform करता है, एक specific block of code होता है जिसको हम function बोलते हैं. But basically function का काम ये होता है कि वो specific task हमेशा perform करता है, और वो task जो है वो वही फंक्शन को असाइन कर दिया जाता है फॉर एवर. ओके, एक फंक्शन बना दो और उसको एक स्पेसिफिक टास्क असाइन कर दो. इन फ्यूचर कभी भी उस फंक्शन की उस टास्क की जरूरत पड़े, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट फंक्शन. It is so simple and so easy, okay, to perform, right? आपको बार बार वो code and everything, it's not like to be right every time. You can directly call that specific task with the name of that function. So function is basically like that only. And the next thing is how you can write the syntax. Syntax क्या होता है function का? Function लिखने का basically ये syntax होता है. You have to write a def. Def is a short form of define. Okay, जो हमें define करना है function. So with the help of def, which is the keyword, def के बाद you can write the function name. जो भी function name आप assign कर रहे हो, it is up to you. You can assign any name to any function, right? And after that, once you assign the name to the function, you have to write the parenthesis. Parenthesis, it means it is also come under the syntax. So पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्ड इन होते हैं. बिल्ड इन इट्स समथिंग लाइक जो पहले से होते हैं. We are going to that topic also, but till here you have to understand that how you can write the syntax for a function if you want to define the function, right? आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट समथिंग वैल्यूज होती है जो आप फंक्शंस में पास करते हो, राइट? जो पेरेंथेसिस, ये पेरेंथेसिस आप ओपन करोगे फंक्शन के नाम के आगे, सो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यूज पास ऑन करनी है. When we are dealing with the example, so you can understand what are the arguments, but till now you understand that argument is nothing but the values, okay, which is passed to the function. function को passed होने वाली है, जब भी function call होगा तो ये values you will get with the function. Okay, so I hope till here you understand what is function. So let me go with the next slide. Yeah, I have defined here one of the example, real world example, जो हम Python sorry programming language में देखेंगे function का use क्या होता है. This example is something you can see in a programming language, right? So yeah, ATM machine. ATM machine, when you are using ATM machine, so you will get some of the options, right? Like a withdraw, deposit, balance, like that.
सो हर एक स्पेसिफिक ऑप्शंस जो डिफाइंड हुए हुए होते हैं, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, राइट। विड्रॉ नेम है एक फंक्शन का, वो क्या, इसके पीछे का फंक्शन क्या होता है कि आप पैसे निकाल सकते हो, राइट। विड्रॉ में आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, नो। और इफ यू वांट टू सी अ बैलेंस, सो यू कैन सी द बैलेंस विद द विड्रॉ ऑप्शन, नो। विड्रॉ का जो स्पेसिफिक टास्क है वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने वाला है, वो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने वाला है। जब जब न्यू यूजर और न्यू थिंग स्टार्ट होती है, देन दे परफॉर्म देयर टास्क, ओके। उसे किसी और के फंक्शन से कोई भी मतलब नहीं होता है, राइट। सो एंड with the second option, deposit, you can deposit with the help of that function। डिपॉजिट से सिर्फ डिपॉजिट ही होता है, you cannot withdraw your money with deposit function or balance, see the balance, right। or balance say you will check your balance, you are not able to deposit or withdraw with the help of this option। so तो here is explain that कि यहाँ पे जितने ऑप्शंस, जितने फंक्शंस आप चाहो डिफाइन कर सकते हो, और कितना इजी होता है कि विद द हेल्प ऑफ वन नेम से, एक नेम से आप पूरा उसका जो भी फंक्शन है, जो भी वो स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, वो आप यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ तीन डिफरेंट फंक्शंस बने और तीनों फंक्शन के अलग 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 स्पेसिफिक टास्क है, और ये हर बार जब जब रन होता है, जब न्यू यूजर आता है, तो ये अपना टास्क जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, राइट। सो दिस इज द वन ऑफ द रियल वर्ल्ड function, or is sorry example you can see in a programming language, right। so let me go with the next slide, yes, which is the built-in functions। so python में कुछ built-in functions present होते हैं। ये functions ऐसे है कि इन्हें forever के लिए इन्हें हम लोग ने specific task जो assign कर दिया है, you can't change it, right। एक फंक्शन से तो you are very familiar with print function। till here we have saw print in many of the example, till now we have done in a previous tutorial। so print भी एक function है। so आप as you can see here, print function name and it is ended with parenthesis, right। तो इसके अंदर if you are remembered or not कि हम print के अंदर कभी कभी कोई भी मैसेज डाल देते, enter the name or print x or anything, so that is the argument, right। जो हमने अभी argument, what is the argument which we have saw, so आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर होता है, जो फंक्शन जब कॉल होता है तो वो चीज जो अंदर जो वैल्यू है वो भी पास्ड ऑन होती है, राइट। सो प्रिंट फंक्शन जो पाइथन में है, उसका प्रिंट फंक्शन का एक ही स्पेसिफिक टास्क होता है कि वो प्रिंट करता है। वी हैव अ डिफरेंट मोर बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लाइक लेन फंक्शन। लेन इज समथिंग इफ यू हैव अ लिस्ट, राइट, उसमें कितने नंबर्स प्रेजेंट है, सो कितनी लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ आइटम्स है, 5 4 10 लाइक दैट। so they will show you the output, right। input function भी I hope you remembered, we have saw this function in decision making tutorial, right there we want any of the value from a user, ओके। रियल टाइम में अगर हमें वैल्यू चाहिए यूजर से तो हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हियर we can write the message that enter your name, enter your percentage, like that। so वो arguments होते हैं, वो called होते हैं साथ में whenever we call that function, right। so this is the input function, ये सब built-in function है। type is a function, suppose if you want to check the data type, मतलब integer value है या character है या decimal point which is the float, so that is used for that purpose। range is something like you have to perform any of the task between 0 to 5, so एक range आप specified कर दो तो ये function जो है they can do their task। max function is something if you want to check a maximum number,
which is present in your list. So ये max से जो भी सबसे highest, जो सबसे बड़ा number होगा, they will give you then output, right? And the minimum is the opposite one, right? जो smallest होगा वो आपको output देगा. So ये कुछ built-in functions है जो Python में already present होते हैं. You can directly call the function by their name and you will get your output. But beside this, if you want to make a function with a new specific task, so for that also you can build your function. And from the next video we are going to see the examples on functions. So I hope till here you understood each and everything about a function, how you can define the function, what is the built-in function है, and real world में functions के क्या used होते हैं. Okay, so I hope it is clear to you. And thank you so much for watching and learning with Python AI Lab. And make subscribe to the channel for the next tutorial where we are going to do a hands-on on function, right?